नमस्ते जी, नमस्ते. होप you're doing well. तो आज की चर्चा का विषय, as more and more technology intrudes into our personal lives, you will see more and more mental illnesses creeping in. That is why it is absolutely imperative and crucial कि आप अपने मन को बचा के चलें. अब ये हो क्यों रहा है, पहले उसका कारण समझ लेते हैं. कारण समझ लेंगे तो समाधान भी आ जाएगा. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रूड कर चुकी है हमारी पर्सनल लाइफ में. Our minds, especially not the brain, but the minds will start taking a hit, which will eventually affect our brains as well. हो क्या रहा है? For example, this brain or mind is not really designed to take an endless amount of information. It just cannot absorb an endless amount of information, and endless amount of information is actually being thrown at us via social media. That will enable a lot of mental illnesses. So for example, अगर आप ट्विटर देखते हैं, ट्विटर क्या है exactly? ट्विटर is बहुत सारे लोगों के विचार जो कि वो लोग लिख रहे हैं और आप consistently उनको पढ़ रहे हैं. Now imagine if you had the power to read, let us say that you are standing outside on the road and read everyone's mind in one go. So a lot of whispers will pop up in your ears कि कौन क्या सोच रहा है, कौन कितना परेशान है, कौन कितना खुश है. And it will start taking a toll on you. अब होता गया है कि जैसे ही हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई ना कोई लड़का लड़की नाच रहे होते हैं, कोई ना कोई अपने आप से ही बात कर रहा है. कुछ ना कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन आपके कान और दिमाग में सदा जा रही है. उससे क्या हो रहा है कि एक तो यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मेंटली टायर्ड, almost always, and the net effect of that is that you are unable to function at your full capacity because your battery, which is limited per day because you need to recharge while sleeping, वो बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है इस वेली इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने में. और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी कोई नीड भी नहीं है हमारे सिस्टम में. जैसे कि जस्ट टुडे दैट आई लॉग्ड इन ऑन वन ऑफ माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, देयर वाज दिस वन मैन, तो मुंडी है, मुंडी इट्स जस्ट अ वॉकिंग टॉकिंग हेड who is just constantly blabbering out information which I really don't need, but I cannot avoid absorbing that. But what I have noted is that मेरी बैटरी 1 by 1% नीचे ही जाती रहती है थ्रू आउट द डे. और अगर आपने जीवन में कुछ भी अचीव करना हो, मटीरियली, स्पिरिचुअली, वट एवर इट इज, जो कि एक ढंग का गोल होगा, उसमें यू हैव टू प्रिजर्व योर बैटरी. एंड टुडे दिस 5-inch टेलीविजन बिल्कुल मतलब इट स्टेयरिंग almost always staring back at us with light. Imagine, let us say that you get up in the morning and somebody just throws a light from a torch at you, and it is white, blue, red, anything. That is what we do as soon as we wake up. जब भी हम phone use करते हैं, that is what we are doing. We're throwing a torch's light at us, but our minds don't decipher it as a torch की light because उसमें टेक्स्ट, ऑडियो एंड साउंड है which we can make sense of. तो हमें लगता है अरे इसमें क्या दिक्कत है. Whether you are on the pot taking a or rather doing potty, तो उसमें भी तब भी फोन ही है. फोन इन द सेंस टीवी ही चल रहा है. खैर एनीवे, मैंने काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा करी हुई है इस चैनल पे. तो 2023 onwards, जब AI is now just that one very public accessible AI is now into the public domain, that is chat GPT, things are going to go, life will become insanely easy, but us as human beings will then mostly be villa, and based on this insane amount of information that is being thrown at us, which we are unable to protect ourselves against because, well, social media की आदत पड़ गई है हम सबको. You will find कि depression आएगा आपको भी, neurosis हो जाएगी. जैसे कार्ल यंग also used to say कि मतलब दुनिया को लग रहा है कि वो बीमार है नहीं, बट बीमारी की एक फीलिंग आ जाएगी, then that is worse than an actual बीमारी, and that is an absolute insane state to be in. सारा टाइम एंजाइटी हो रहेगी, घबराहट रहेगी, क्योंकि you will see examples of hyper successful people all around you on social media जो कि वो है नहीं बट झूठ बोल रहे हैं, बट any which way, बट दिमाग को तो लग रहा है कि वो है. और सारा टाइम ये परेशानी रहेगी कि यार मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ जो ये लोग कर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी शायद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. और एक और चीज़ होगी कि कंसिस्टेंटली टीवी देखते देखते, दैट इज योर फोन बेसिकली, 5 इंच का टीवी देखते देखते, सो मच इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू गो इन दैट यू विल बिकम डिप्रेस्ड. एंड देन आगे लाइक फॉर फ्यूचर कि कुछ काम ही नहीं होगा, मोस्टली सारा काम एआई जब निपटा रही है, तो हम क्या करें.
तो परेशान हो जाएंगे, परेशान होंगे और डिप्रेशन में रहेंगे कि भैया सारा काम तो ये अपने आप ही ऑटोमेटेड ही हो गया है। एंड दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट 20-30 years डाउन द लाइन, बट होगा यही गिवन द स्पीड एट विच वी आर प्रोग्रेसिंग इन कलयुग। तो उसके लिए ऑलमोस्ट ऑलवेज एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, things which AI can perhaps never ever compensate for, or social media can never ever compensate, वो जरूर आप करिएगा, that is workout. Make it a habit कि वही दिन के आधा घंटा या 45 minutes, just like you brushing your teeth, just like you sleep, कि 45 मिनट या आधा घंटा वर्कआउट जरूर हो, whether it's a walk, that will keep you sane. Then during that walk there should not be any music, मतलब वो हेडफोन लगा के, जैसे कि आजकल इन्होंने आदत डाल दी है वर्कआउट में इतने बड़े बड़े हेडफोन लगा रखे हैं, उसमें भी एक आदमी संगीत गा रहा है, संगीत में या तो वो अपना दुखड़ा गा रहा है या बहुत खुश है, या मतलब एक आदमी कॉन्सिस्टेंटली बोल रहा है, वो ना हो। क्योंकि आपके मन को आराम चाहिए, क्योंकि अगर आप मन को आराम नहीं देंगे, एंड व्हेन यू क्रॉस 35-40, most likely Alzheimer's, dementia, or any of these neurological illnesses, I'm really not a doctor, but मतलब chance बढ़ जाते हैं, that is what my common sense tells me, because your mind will be so exhausted, and if you have a weak nervous system, it will tend to become a nightmare. तो जैसे जैसे जीवन सरल तो हो रहा है टेक्नोलॉजी से, बट मुसीबत है कि these illnesses will keep on rising, and perhaps you as a viewer who's watching this right now may also be susceptible, just like I am. So I also tend to protect myself from all of these electronic devices, especially exposure to social media and the text that there is, or the video or the audio that there is, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा designed नहीं है, डिज़ाइन तो खैर endless चीज़ों के लिए, because at the end of the day this is the highest life form on the planet, at least in this dimension at least. And उसके अलावा मतलब अगर इतना ज़्यादा कलेश फेसबुक पे पोस्टों पे या पॉलिटिकल डिस्कशंस ऑनलाइन, एंड you will usually find Twitter is an asylum of mentally ill folks. मतलब इनको ज़्यादातर ज़िंदगी में जब सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रही तो पूरा दिन पूरी रात ये ट्विटर पे वहीं पे एंगेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं मुझे अकेला रहना पसंद है। आप अकेले हैं कब? तो आप ट्विटर पे भी तो लोगों के साथ ही हैं, या इंस्टाग्राम पे भी तो लोगों के साथ ही हैं। इवेंचुअली वी ऑल नीड सोशल इंटरेक्शन। तो वर्कआउट ज़रूर करें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि दिन में एक टाइम तो ऐसा हो या एक घंटा ऐसा हो जिसमें आप टोटली डिजिटली अनकनेक्टेड हो, else you will start losing it. Thirdly, the person has to have a habit of reading. Now all books are not good, all books are certainly not good, neither are all authors good. ये तो वो किताब और पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने हवा मचा दिया कि people should be well read, people should read more and more, etc. But ये आप जरूर याद रखें कि रीडिंग हैबिट will take you a lot farther in life later on, because people who will be able to read, write and speak well, जहाँ पे AI वेआई नहीं काम आएगी, will be very far and few in between. So you may want to work on your reading, writing and speaking skills. Then अगला जो step है, perhaps what one needs to do is at least once a year you are out of the town and into the mountains or wherever near a water body, and try to connect back with nature, because at the end of the day we are all, you, me, everyone is a walking talking you can say a walking talking plant. It needs sunlight, it needs connection back to nature to survive, and since that is not happening, or that will not happen in the future as well, one tends to become depressed. तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे आप बचें। एंड अभी भी like one of my students in one of my offline batches was hellishly disturbed, and all that I could think of कि यार ये आदमी पक्का, it's just too much social media content is going inside of his mind and the entire psychological, the body, the complex, and it is ruining many lives instead of enabling. देखिए टेक्नोलॉजी इसलिए बनी थी so that life becomes easy. Now for example, a camera is also created was must have been created for shooting an infant's memory, but we use it to shoot porn. A camera can also be used to shoot such stuff. A laptop के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है which we बेसिकली क्रोम वगैरह पे ही, वेब ब्राउजिंग में ही इस्तेमाल करते हैं, बट अगर क्रिएशन करें तो बहुत कुछ हो सकता है उससे। ऐसा डिवाइस मतलब इट इज एक्चुअली दैट पावरफुल. So people use technology in the way that is the lowest, dumbest denominator, which is absolutely fine. I also use it in that way. But
Technology बनी किसी और चीज के लिए थी. Now since it has been used in an alternate way, this will kill all of us mentally. And the last point before we conclude this session is have a purpose in life, have a higher purpose. Usually a lot many depressed people get to the realization that life means nothing. कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आओ पैदा हो खाओ पियो middle life and then you pass away. So have a purpose, have a purpose, have a goal to run after, have a goal to dedicate yourself, no matter what the result. Because without that, we will just wander around aimlessly without any rhyme or reason. And beware of excessive consumption of technology. It will affect you mentally. Sooner or later, it is going to affect you, and it's going to affect you a lot. Because ये लगता नहीं है कि कोई काम कर रहे हैं, but energy तो spend हो ही रही है social media. Like for example, if you are watching it till now, if you're watching this session till now, you have spent a considerable amount of energy in viewing this and listening to my pre-recorded voice. I'm not even there when you're watching this. I thought I'm long gone. But you're watching this right now and you're expending energy. And if you're expending energy constantly, and it's energy limitless to any, it is a limited finite amount in your body mind complex. You're using it right now, and you use it more and more on Instagram or Twitter or any of these platforms without using it to earn a living for yourself, that is earning money. You will be mentally dead before you know it. Thus, the more and more technology that you use, more and more chances are that it slowly erodes your mental capacity to comprehend. It perhaps slowly pushes you into depression as well. Watch out. All right. And now I'll see you in the next session. All right. Take care. Bye.